Hello, dear students. In this video, I will discuss about two hinged arch. I hope you have already seen my three hinged arch video. If you have not seen, the link is given in the description box. Please go there, click the link, and you will be able to see the three hinged arch. So, what is a two hinge arch? Arch is a structure, as I have explained you in the earlier video also, that arch is a curved beam um, which is having some advantage. What is the advantage? That there is horizontal thrust developed which is not developed in the beam. So for that advantage we go for the design of the arch. Two hinge arch matlab there are two hinges. Where are the two hinges? The hinges are generally at the two supports, as you can see. So they are called also the abutments. Okay, so I will come slowly to that. First of all, let us start that two hinge arch, the hinges are only at the abutments. Horizontal thrust H is determined from the Castigliano's first theorem. So very soon I will upload the video on Castigliano's first theorem and its application and few problems on that. But for now, let us see that horizontal thrust H is determined from horizontal displacement of hinge with respect to the other hinge of one hinge. Actually it should be of one hinge with respect to the other is 0. That means for this hinge, the relative displacement or horizontal displacement of this hinge with respect to the other is always 0. Based on that, the horizontal thrust is determined. So this is the formula for the horizontal thrust, integration of my dx divided by integration of y square dx. So by this formula we can find it, and this is by applying the Castigliano's first theorem. Okay, so this expression we get. And this arch is a statically indeterminate structure with degree 1. Why? See, because there are two hinges. One hinge is having two reactions, one vertical, one horizontal, right? One vertical, see, this is one vertical and one horizontal. So how many unknowns are there? 2 to 4 unknowns are there. How many equations of equilibrium are there? 3 equations of equilibrium. Correct? So it is a indeterminate structure of degree 1, right? Okay, one thing you have to remember that this formula is valid only for the uniform flexural rigidity. For uniform flexural rigidity, it is it. What is flexural rigidity? That is EI. One second. E is what? Modulus of elasticity. What is I? I is the moment of inertia. Okay, right. Now this is what this is also you have seen in the three hinge arch that the for parabolic arch, the equation of parabola is y is equal to 4h by l square into x into l minus x. What is h? H is the height of the arch from the base. What is l? L is the span. Okay, now see, here are three standard cases I have just demonstrated. This formula will be very handy while you are solving any MCQ for the competitive exam. So for that purpose, see, this is a two hinge arch. Where are the two hinges? At here and over here, right? There is one UDL of W Newton per meter. Length is L, length or span is L, and height of the arch is H, right? So in this case, horizontal thrust is equal to WL square by 8H. When it is half of the span, it is UDL, it is WL square by 16H. And when it is point load at the center of the span and at the top point of the arch, so in this case horizontal thrust is 25 by 128 WL by H. Okay, so now out of these three, I will show you one demo of this one, and by the similar way, this other or any other type of loading can be solved. Okay, so now let us look at this part. Yeah, so this is one two hinge arch. Here W Newton per meter UDL is there. So what we have to find that what will be the value of the horizontal thrust by using this formula. Correct? How we will get the expression? So first of all, we can tell that if this is W Newton per meter and the length is L, so what will be the total load? Total load will be W into L.
So at both the support it will be WL by 2, WL by 2, right? And this is the horizontal thrust, they will be equal and opposite. So H and H, they will equal and opposite, they will balance each other, right? Now for this, how to go for the derivation, we have to take one section at a distance x from the point A. Okay, so bending moment at this point, so let us take it as the point D. What will be the bending moment at that point at a section x? So bending moment will be WL by 2 into x minus W into x. For this much it will be W into x into moment means x by 2, right? And what is y? Y is equal to 4h by L square, x into L minus x. Okay. Now for the expression, you see what is the expression, my dx, है ना, integration, and this is y square into dx. So let us go for it. देखो my मतलब m wl by 2 minus wx by 2. I have taken x common from this expression. So have you understood up to this? Okay. Into y का मतलब 4h x L square divided by 4h by L square into x into L minus x, right? So here what we have done, so w by 2 also we have taken it common, so L minus x, and here 4h by L square into here 1x, here 1x, so x square into L minus x. So by simplifying we are getting this equation, and here in this side I have also solved for y square. Y square का मतलब इसका square होगा ना, so 16 into h square divided by L to the power 4 into x square into L minus x whole square. देखो same thing I have written है ना, y square का value. अभी what is the formula? Formula is h is equal to integration my dx divided by integration of y square dx, right? So what it will be? So this expression you write it down into dx, and in the denominator you write down this equation. Yeah, y square dx means इधर में भी एक dx होगा, right? So if you see that all the, see this and this cancels out, right? x square cancels out, ये 2 और 16 काट होके 8 आ जाएगा, है ना? L square और L to the power 4 काट होके L square रह जाएगा, और इधर से 8 से h square काट होके एक 8 रह जाएगा. So what will be the expression finally? We will get WL square by 8h. Okay, so this is the expression as I have told you. इधर जो भी ये रहता है ना, ये वाला. So by the same way you can solve for these two or any other loading given. For that's why this derivation is important. If you understand the derivation, you can do it for any other problem. Okay. Now we will start with one problem let us see what is the problem, statement of the problem. Here it is one 2-hinge arch, so span of 20 meter and the height is of 5 meter. Now there is one point load at the point C. So now W produces a maximum sagging bending moment of 35 kilonewton meter. This is given. We have to find the location, magnitude of the maximum hogging bending moment. मतलब maximum sagging bending moment का value दिया है. We have to find the maximum hogging bending moment. So first you tell me where will the maximum positive, that is the sagging bending moment will occur. Remember, always the maximum positive moment or sagging bending moment will happen under the load, where the load is acting. In this arch where the load is acting at C. तो C पे maximum ये bending moment होगा. Okay. So now let us see. देखो VA and VB will be what? This will be W by 2 and W by 2, right? है ना? This is W, so equally it will be divided, symmetrical structure, load at the midpoint, so W by 2 हो गया. Now H is equal to, ये देखो ये लास्ट इसमें मैंने बताया था पॉइंट लोड के लिए क्या होता है 25 by 128 into WL by H, राइट? तो ये क्या होगा बोलो, 25 by 128 W, L कितना है 20, H कितना है 5, तो सिंप्लीफाई करो ये 0.78 W आ जाएगा, राइट? देखो कैसे आ जाते हैं,
125 इंटू 20 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 128 डिवाइडेड बाई 5, देखो 0.78 है ना. सो दिस इज ये वैल्यू आ गया. नाउ बेंडिंग मोमेंट एट सी, वी आर टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, ए सी पार्ट का ले रहे हैं. तो बेंडिंग मोमेंट एट सी कैसे निकालेंगे, देखो वी ए इंटू सी तक डिस्टेंस क्या है, सी इज द मिड पॉइंट, सो 10, राइट. वी ए इंटू 10 minus h into height, this is height is given as 5, h into 5. तो va का वैल्यू क्या आया, w by 2 into 10 और माइनस h का वैल्यू 0.78 w into 5, राइट. सो इफ यू सॉल्व इट, इट विल कम 1.1 into w. मतलब ये देखो 10 by 2 मतलब 5 आ गया, हाँ, माइनस विद इन ब्रैकेट 0.78 है ना इंटू 5, देखो 1.1 है ना. सो 1.1 W, ठीक है. सो नाउ दिस वैल्यू इज गिवन एज 35, मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट 35, करेक्ट. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो 1.1 W वी शुड इक्वेट इट विथ 35. सो W का वैल्यू क्या आता है, 35 डिवाइडेड बाई 1.35 डिवाइडेड बाई 1.1, 31.8, जिसको हम लोग 32 किलो न्यूटन ले रहे हैं, राइट. सो W वी हैव फाउंड. ओके, नाउ what we have to find the location and the magnitude of the maximum hogging bending moment. For that what we have to do, from equation number 2, see from here h का वैल्यू हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉइंट इंटू 0.78, हॉरिजेंटल थ्रस्ट का वैल्यू आ गया 24.82, ये कितना आया था, 24.82 आया था, जिसको हम लोगों ने 25 किलो न्यूटन लिया, राइट. नाउ अभी देखो है ना, अभी y का वैल्यू क्या होगा, 4h बाई एल स्क्वायर, h इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स इंटू 20 माइनस एक्स. तो ये एक्सप्रेशन आ गया y का. नाउ बेंडिंग मोमेंट एट x, बेंडिंग मोमेंट एट x के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू बेंडिंग मोमेंट एट x के लिए वी ए इंटू, देखो वी ए इंटू एक्स, वी ए इंटू एक्स ये सेक्शन पे अगर होगा तो वी ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई, 1 सेकेंड, माइनस एच इंटू वाई, इधर दिक्कत, वी ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई, राइट. तो वी ए का वैल्यू क्या आया, वी ए का वैल्यू, सो वी ए, व्हाट इज वी ए, वी ए इज डब्ल्यू बाई 2, देखो इधर ये है, वी ए इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 W by 2, W का वैल्यू क्या आया, 32 by 2, सो दैट इज 16. तो ये 16 इधर पुट किया, 16 इंटू एक्स माइनस एच का वैल्यू कितना आया, देखो 25 इंटू वाई का ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने इधर पुट किया. तो दिस सिंप्लीफाई करके 1.25 एक्स स्क्वायर माइनस 9x आता है, ठीक है. नाउ फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वी हैव टू डू द फास्ट डेरिवेटिव, इक्वल टू 0, सो डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू 0, सो डी डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू 0. तो फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1.25 दैट इज 2.5 एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0. तो 9 को ये साइड में लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू 3.6, दैट मीन्स 9 डिवाइडेड बाई 2.5, 3.6, ठीक है. 3.6 मीटर फ्रॉम ए, क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन कहाँ पे लिया था, ए से ही लिया था ना, ए से एक्स डिस्टेंस पे. तो ये 3.6 में हमारा ये होगा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और हॉगिंग मोमेंट. तो मैक्सिमम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये देखो ये इक्वेशन में एक्स का वैल्यू पुट करो, है ना. देखो तो हम करते हैं फिर, देखो इधर तो क्या होगा, 1.25 इंटू 3.6 स्क्वायर, ओके, माइनस 9 इंटू 3.6, देखो माइनस 16.2 आया, है ना.
सो दिस इज -16.2 किलो न्यूटन मीटर। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करते हैं? हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो मतलब क्या समझ में आया कि ए से 3.6 में तुम्हारा हॉगिंग होगा, और सी में जहाँ पे लोड एक्ट हो रहा है उधर तो पॉजिटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, है ना। इधर 35 और इधर ये पॉइंट को अगर डी देते हैं तो उधर -16.2। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो ऐसा रहेगा, 35 और इधर, ठीक है। सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बाय दिस वे वी कैन सॉल्व एनी अदर प्रॉब्लम ऑन 2 हिंज आर्च। ये वीडियो अगर पसंद आया तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर अच्छा लगता है तो उधर कमेंट बॉक्स पे कमेंट डालो, लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताओ और कौन कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकती हूँ मैं, तो मैं वो टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। मेरे को स्ट्रक्चर्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, वाटर रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल सर्वेइंग, कोई भी टॉपिक के ऊपर डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट, एंड प्लीज़ put your comment in the comment box. That will help me to put more videos and upload more videos for you. Okay, tata, bye.